it also comes down to lack of identity, because right now, with however Ten Hag is lining up with Manchester United, it seems that he has no clear identity, no clear प्लान कि मुझे अपनी टीम को इस तरीके से लाइन अप करना है. Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me, Satvik. And आज का एपिसोड, as I've already mentioned my story as well, मैंने बताया था कि this is an episode that I want to do on Manchester United. And frankly speaking यार, यूनाइटेड एज अ क्लब वो बन चुका है जहाँ पे अगर मैं एक प्लेयर हूँ या एक मैनेजर हूँ, आई थिंक यूनाइटेड माइट बी वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस दैट आई वुड वांट टू बी. एंड इतना सैड है ना ये सब, बिकॉज एट वन पॉइंट मैनचेस्टर यूनाइटेड was the biggest club in the world and is still one of the biggest clubs in the world. तो यार मेरे लिए ना देखो, clubs like AC Milan, Liverpool, United, Real Madrid, Barcelona, Ajax and Bayern Munich, these are clubs that are, elite clubs and, will always be legendary clubs. So, as much as I'm not a fan of Manchester United, I don't really like the club, but just as a football fan, it's sad to see कि, दुनिया का सबसे बड़ा क्लब इज गोइंग थ्रू सच अ बैड फेज. एंड मुझे याद है, मैं अभी अपने दोस्तों से बात करता, इट्स एज बैड एज AC मिलान और इवन वर्स. एंड दिस इज सच अ सैड पार्ट. बट हुआ क्या यार, एवर सिंस एलेक्स फर्गसन गए हैं, व्हाट द हेल रॉन्ग हैज़ बीन हैपनिंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है. एंड हम डिस्कस भी अलग अलग चीज़ें करेंगे. वील बी टॉकिंग अबाउट द फुटबॉलिंग एलिमेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द पिच. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग आउटसाइड द outside the pitch, outside 90 minutes, whether it is the Glazers जिसको majority blame जा रहा है, whether it is the transfer policy, whether it is the और अराउंड द क्लब. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है यूनाइटेड के साथ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो 2013 was Alex Ferguson's last season, right? And 11 साल हो चुके हैं. United, have not won a single Premier League, have not been competitive in the Champions League, and second was their best finish under Jose Mourinho, if I'm not wrong. And हम सिर्फ मैनेजर्स को नहीं ब्लेम कर सकते यार. 10 साल में you've had like 5-6 managers and managers of the quality of Jose Mourinho, and a guy who's won everything there is to win on a footballing pitch, right? When it comes to club football. तो हम अगर हमेशा एज यूनाइटेड एज अ क्लब और एज फैन हम सीधा ब्लेम डालते कि मैनेजर गलत है, आई थिंक दैट इज अनदर प्रॉब्लम. तो स्टार्टिंग ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो मैं थोड़ी बहुत नॉन फुटबॉलिंग और नॉन पिच रिलेटेड चीज़ों को एड्रेस करना चाहता हूँ. आई थिंक यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक अभी है इज़ वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है. एंड बाय दिस आई मीन कि एज फैंस इतना प्रेशर होता है, एज अ क्लब एंड एज अ मैनेजर इतना प्रेशर होता है तुम पे, बिकॉज यू आर प्लेइंग फॉर द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, राइट? एंड I think when you move away from a legendary figure like Sir Alex Ferguson, and you move away from legendary players like Ronaldo, like Rooney, like Paul Scholes, वो सब उनका भी एरा खत्म हो गया था, right? So one has to expect कि थोड़ा rebuilding में time लगेगा. Obviously वो 10 साल हो चुके हैं, that is not less, but I think the pressure of just being Manchester United did not really help. And because Manchester United है, patience ही नहीं थी यार मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस में या इवन द मैनेजमेंट. कोई भी मैनेजर आता है उस पर इतना प्रेशर होता है, साल 1.5 साल परफॉर्म ना करे एंड द मैनेजर इज फायर्ड. जोसे मरीनो यार, दैट गाय वाज गेटिंग यू रिजल्ट्स. अगर तुमको ये भी चाहिए कि रिजल्ट्स भी आए, यू प्ले द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टाइल ऑफ फुटबॉल, बहुत अनलाइकली है यार. यू गेट अ पेप गार्डियोला इफ यू हैव टू डू दैट, राइट? बट यू डोंट यार, यू डोंट हैव इट. सो एज फैंस, एज क्लब people that we've also got to understand is you have to give people time. Arteta का first season था, वो 8th आया. जर्गन क्लॉप का फर्स्ट सीजन था, वो 8th आया. सेकंड सीजन भी वो लिवरपूल 4th या 5th आई थी. आर्सेनल भी अपने सेकंड सीजन अंडर आर्टेटा wasn't the best. And you have to give people time for them to adjust and for them to start building their tactics or getting the team
a structure or giving the team an identity. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जहाँ पे यूनाइटेड कि हर एक मैनेजर, हर एक प्लेयर, हर एक कोच पे इतना प्रेशर था टू जस्ट लिव अप टू द हाइप ऑफ सर एलेक्स फर्गसन और टू गेट द रिजल्ट्स दैट सर एलेक्स फर्गसन ब्रॉट इन, जो नहीं पॉसिबल, एंड दैट इज अ हार्श फैक्ट दैट वी नीड टू एक्सेप्ट, right? Here another reason I think which has been one of the biggest reasons for the poor performances, transfers. Yeah, I think United have made some terrible signings and terrible calls when it comes to the amount of money that they spent. Yeah, spending what 70-80 odd million on Hoyland, 80 odd million on Maguire, Di Maria, Paul Pogba, डॉनी वैन डे बीक, इतनी सारी साइनिंग्स आ रही हैं यार मेरे दिमाग में, मेम्फिस डिपाई, ऑल ऑफ दीज पीपल फेल्ड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, रोमेलू लुकाकू यार. सो दिस हैज़ गॉट टू बी वन ऑफ द मेजर रीजन्स, एंड दिस इज़ वन मेजर रीजन कि इतनी शिट ट्रांसफर्स हुई हैं, एंड दैट इज़ ऑल डाउन टू देयर स्काउट्स, दैट इज़ ऑल डाउन टू देयर रिक्रूटमेंट टीम, एंड दैट इज़ डाउन टू सम मैनेजर्स एज वेल, राइट? बिकॉज हमेशा हर जब भी कोई मैनेजर आता है वो अपना टाइप ऑफ प्ले के लिए प्लेयर लाना चाहता है. जैसे अगर मुरीनी आया था, उसको लुकाकू चाहिए था और मैटिच चाहिए था, जो थोड़ी फिजिकल प्रेजेंस विच सूट्स द गेम दैट मुरीनी वांट्स टू प्ले, राइट? एंड अगर आप सिमिलरली उसी फेज में आप देखोगे एक लिवरपूल को या फिर एक मैनचेस्टर सिटी को, लुक एट द साइनिंग्स दैट देव डन, एंड वी कर्स एंड वी यूज्ड टू बैश मैनचेस्टर सिटी की ये तो क्लब्स पैसों पे बन रहा है. देव बीन नेट पॉजिटिव ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू जस्ट money spent on transfers versus money received from transfers, and they've not gone out of crazy, बहुत crazy spending नहीं की है उन लोगों ने, when you compare the likes of Chelsea or even Manchester United, right? I think Jack Grealish was one of the most expensive signings, right? And whatever they've signed, these guys, 90% of them have performed for them. So obviously it comes down to the management style and comes down to Pep Guardiola as well, but the fact that United signings have been nothing but poor is another reason that the club is in such a poor position. And similarly एक और factor for the another non-footballing factor is again the Glazers, and बहुत clear है इसके सबके बारे में आराम से बातें हो रखी हैं कि उन लोगों की the ownership has made absolutely zero change over the last 10-15 years. रोनाल्डो आया था, रोनाल्डो ने भी अपने PS मॉर्गन के इंटरव्यू में यही बोला था कि the facilities are what 15 years ago जब मैं छोड़ के गया था तब भी वही थी. And in the meantime, you look at clubs like Tottenham, you look at clubs like City, and the facilities that they've made, and the sort of infrastructure development that has happened in those clubs, right? So ये सारी चीज़ें have not helped the way Manchester United's last decade has worked out, and प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, मैनेजर सही नहीं है या फिर प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करे, तो along with all of these things happening on the pitch, सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ये सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम्स ऑन द पिच. यार तो अगर आप Ten Hag को देखोगे या the way that United have lined up, particularly in this season, United usually play with a 4-2-3-1, right? With two pivots or two holding midfielders, and then we have the attacking midfielder along with the wingers, and then the center forward, right? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ क्या United के लिए is, according to me, the transition, right? The transition from midfield to attack, and that is, I think, by far the biggest problem with Manchester United. They're not creating enough chances, and the quality of the chances that they're creating वो भी बहुत poor है. And I think one of the major factors for this is is lack of the right individuals in the midfield, right? You've signed a goalkeeper, एक ball playing goalkeeper, and अगर अभी भी आप stats देखोगे, United are playing much less long balls from goal kicks as compared to what they did जब डेविड हाया goalkeeping थे, right? goalkeeper थे. But the problem is even the center backs for United, right? अभी
Varane injured था, Lisandro Martinez injured है, and right now the current partnership is Johnny Evans and Maguire. So that is also a problem कि आपके center backs भी are not the strongest on the ball, like that is not their strongest suit, right? And for in order for United to counter that, the two pivots should be excellent on the ball for the transition from midfield or the defensive third to the attacking third to take place. तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेसन माउंट को साइन किया था यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिकॉज जब यूनाइटेड अटैक पे होती है तो दे प्ले विथ 3 एट द बैक इन अ पिवट, राइट, जहाँ पे जो होल्डिंग मिडफील्डर है जो कैसेमीरो था इन अ लॉट ऑफ टाइम लास्ट ईयर, ही वुड कंबाइन विद बोथ द सेंटर बैक्स एंड कैसेमीरो वुड यूज टू एक्ट एज द पिवट जो आपकी काउंटर अटैक ब्रेक करेगा. नाउ यही चीज़ आई थिंक मैंने लास्ट ईयर भी बोली थी, ये चीज़ मैंने स्पर्स के लिए बोली थी और यही चीज़ मैंने लिवरपूल के लिए भी बोली थी. उनके पास बॉल कैरियर नहीं है, राइट. थियागो एल्केंटरा खेल रहा था, हेंडरसन था, वो बॉल कैरियर्स नहीं थे. लास्ट ईयर स्पर्स के लिए बेंटन कोर इंजर्ड था तो उनके पास कोई बॉल कैरियर नहीं था, राइट. बोथ ऑफ दीज टीम्स हैव नॉट solved this problem, right? Spurs have signed James Maddison and Liverpool have signed Dominic Szoboszlai. Both of them are doing this particular job role perfectly. नाउ यूनाइटेड के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो 2 पिवट के साथ खेल रही है. इन एन आइडियल केस सिनेरियो वन ऑफ दीज पिवट्स शुड बी द बॉल कैरियर बिकॉज दे डोंट वांट ब्रूनो फर्नांडिस टू बी कमिंग डीप टेकिंग द बॉल, बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस है वो अटैकिंग थर्ड में ज़्यादा बेटर है और उनकी जो पोजिशनिंग है वो अटैकिंग थर्ड में ज़्यादा बेटर है, राइट. तो ideal case scenario, Mason Mount was supposed to be that player, and honestly if you ask me right now, I still think Mason Mount is the right signing. I think in the long term Mason Mount will solve that problem for them because I genuinely think he's a good player. Out of form है वो एक बहुत बड़ी problem चल रही है, but now that they've been playing with 2 pivots, right? Christian Eriksen ball carrier नहीं है, Casemiro ball carrier नहीं है, Scott McTominay ball carrier नहीं है, and आपका अमराबाद भी ball carrier नहीं है, right? तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, a lot of times Bruno Fernandes has to come and get the ball, right, deep. तो उनकी जो आगे चांस क्रिएशन की इफेक्टिवनेस है ना वो ड्रॉप हो जाती है, राइट. तो आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द पिवट इज द रोल दैट जहाँ पे उनकी जो ट्रांजिशन है फ्रॉम मिडफील्ड टू अटैक वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है अच्छे से, राइट. एंड व्हेन यू लुक एट टीम्स लाइक स्पर्स और लाइक लिवरपूल एज वेल, adding to their midfield carriers, they also have players like Mohamed Salah, Heung-min Son, Kulusevski, or Luis Diaz, players who take it upon themselves to carry the balls from the wing or from the midfield and then create chances. United के पास वो players ही नहीं. Marcus Rashford is out of form. Anthony looks out of sort. Anthony does not look a Manchester United का player. And क्या हो रहा है, वो बेचारा लेफ्ट विंग पे जाता है, अपनी ट्रिक्स एंड स्किल्स करता है, थोड़ा शो ऑफ करता है, रादर देन टेकिंग इट अहेड विद द विंगर विद द ऑपोजिशन फुल बैक, वो मुड़ता है वापस फुल बैक को पास कर देता है. नाउ दैट वैन बिसाका इज बैक, राइट, वैन बिसाका इज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल फुल बैक ऑन द बॉल एज कंपेयर टू अ डालो और Kieran Trippier, player playing in the similar positions, right. तो राइट विंग तो उनका एनीवेज बड़ा इनइफेक्टिव सा हो गया यार. अब आपका जेडन सैंचो खेल नहीं रहा, सारी प्रॉब्लम पड़ी हुई है, जो एक बॉल कैरियर था आपके पास, राइट. एंड एंटनी इज अ वन ट्रिक पोनी. व्हाट ही विल डू, स्किल करेगा, कट इनसाइड करेगा, अपने लेफ्ट से या शूट मारेगा या क्रॉस मारेगा, राइट. उनकी 90% ऑफ द टाइम फुल बैक नो कि वो बंदा भाई ओवरलैप या फिर स्ट्रेट रन मारेगा ही नहीं अंदर क्रॉस करने के लिए, बिकॉज नंबर 1 उसका राइट फुट इतना वीक है एंड ही 90% ऑफ द टाइम ही टेंड्स टू कट बैक, कट इनसाइड एंड देन ट्राई टू स्कोर अ गोल. एंड इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेसन माउंट का ना फॉर्म में होना ना, दे डू नॉट हैव द राइट रिप्लेसमेंट. एरिक्सन इज मोर ऑफ अ डीप लाइंग प्ले मेकर जो बॉल कैरी नहीं करता है, राइट. एंड यूनाइटेड क्या कर रही है, अब एंटनी अच्छा नहीं खेल रहा है तो ब्रूनो फर्नांडिस राइट पे शिफ्ट कर देते हैं कई मैचेस में. एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि द बेस्ट प्लेयर दैट ब्रूनो फर्नांडिस isn't playing in the position that he ideally should be playing, right. तो इतने ये जो सारा मिडफील्ड का प्रॉब्लम है ना, दैट इज वेयर यूनाइटेड लैक्स everything, and it also comes down to lack of identity because right now with however Ten Hag is lining up with Manchester United, it seems that he has no clear identity, no clear
प्लान कि मुझे अपनी टीम को इस तरीके से लाइन अप करना है, राइट. एंड आइडियली क्या सोल्यूशन है, वॉट अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट सोल्यूशन फॉर यूनाइटेड टू गेट आउट ऑफ दिस मेस. Number one, I think it's very important for the fans to accept the fact. I know a lot of you all might have already done it, but it's very important to accept the fact that United वो United नहीं है. United is right now a mid-table team in the Premier League, and as harsh as it may sound, with the way that they've been playing, I think there are at least 7 to 8 teams better than Manchester United in the Premier League currently. क्या solution है? I think number one, trust Erik Ten Hag. I genuinely think he's the right guy, but you guys need to give him time. What he also needs to do is अपना एक प्ले सेटअप करना है, राइट. गिव हिम टाइम. अगर एक सीजन 12-13 भी फिनिश करते हो ना, एटलीस्ट इस्टेब्लिश द टाइप ऑफ टीम दैट यू वांट टू लाइन अप एंड इस्टेब्लिश द टाइप ऑफ प्ले दैट यू वांट टू लाइन अप, राइट. ऐसा नहीं हो सकता तुम एक मैच ये, दूसरे मैच ये, तीसरा मैच ये, तुम ये नहीं कर सकते हो. तुम स्पेशली एक टीम के लिए लाइन अप कर रहे हो 10 में से एक मैच में, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. बट व्हेन यू चिप एंड चॉप प्लेयर्स, व्हेन यू चेंज प्लेयर्स एवरी अदर मैच, एंड येस इंजरीज हैव नॉट हेल्प्ड, बट आई स्टिल फील कोई क्लियर आइडेंटिटी है ही नहीं यार Erik Ten Hag United में, right? So that they need to establish that. Number two, find players that suit the type of play that you want to play, and not sign players because you are Manchester United and because you are pressurized to sign some big money player every season because you're failing in the league, right? So get the right players, right? Get players who would fit the system, right? And give them enough chances. I think Barcelona के लिए, being a Barcelona fan, I can easily say that La Masia is the saving grace in this difficult time for us. So get players from the academy, get players who know the system, get players who are willing to give their heart and soul for Manchester United, because right now on the pitch, the intensity with which Manchester United players are pressing, the way that they are playing, it is not the way it is supposed to be. You are not supposed to play for Manchester United with that लो इंटेंसिटी. तुम्हारी प्रेसिंग भी इतनी हाफ हार्टेड लग रही है मुझे. प्लेयर्स लाइक मैकटोमिने, इफ आई रिस्पेक्ट मैकटोमिने, राइट, ही इज अ गुड प्लेयर, बट ही इज नॉट समवन हु मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन रिलाई ऑन द लॉन्ग टर्म, राइट. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू गाइज गेट द राइट प्लेयर, एंड if those have to be young players from the United academy who have to be given chances, give them those chances, right? We found the likes of Gavi, Balde, Fermin Lopez, Lamine Yamal because of the problem that Barcelona was in or is in right now, right? So I think United needs to do that. And lastly, I think bada important hai, obviously the ownership changes, the facilities in the club changes, because until and unless that happens, they will remain an average club. I think look at Tottenham, look at Manchester City, the facilities that these clubs have provided to their teams, to their players. It's very important because in order for you to compete with the likes of Man City and Liverpool, it's very important for you to get those right facilities. And for God's sake, Erik Ten Hag, this is the request, establish one kind of play that you want to play. I know it's difficult. I know it's difficult with injuries. But even in the one and a half years that, Ten Hag has been here, I don't see a clear pattern of play. Last year, honestly, they overperformed because Marcus Rashford was probably in the form of his lifetime. And now, जब इस season में वो perform नहीं कर रहा है, we can see how ineffective United are in attack, right? Højlund ने अभी तक Premier League में goal नहीं मारा है. Most of their goals is coming from Bruno Fernandes, right? Open place उनका XG, I think league में 11th या 12th पे है. And that shows the sort of, ineffectiveness that they have in the attacking third, or in terms of just creating goal scoring opportunities and creating good goal scoring opportunities. So leave Bruno Fernandes who's number 10 role mein so that he can be at its absolute best. Give Mason Mount some chance, give the right players some chance, have one pivot and have someone who with a free roam role. Pata nahi, honestly, right now United just seems in shambles and बहुत poor performances are, and I hope that changes. I really hope, because United being at their top prowess, United being the way United is supposed to be, is good not just for United fans but for world football. And yes, with this I would like to end the episode. For everyone who stayed with us throughout the episode, thank you so much. Trust me, there is a great podcast coming up in the next couple of weeks, right? And something that everyone would love to watch. So stay tuned, like, share and subscribe,
And I'll see you very soon. Thank you and have a nice day.